Assalamu alaikum students. Our content information subject biology grade 10 unit number 10 gaseous exchange. Our topic is the air passageway and the lungs. Objectives are the air passageway, glottis, pharynx, voice box, trachea, alveoli, diaphragm, pleural membranes, the lungs. The air passageway consists of the part through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. This passage of air consists of the following parts, just like as shown in diagrams. जैसे कि नेजल कैविटी आपको डायग्राम में दिखाया गया, नॉस्ट्रल्स दिखाया गया. Those are the important checkpoints of the diagram. It opens to outside through the openings called nostrils, just like we talked about it. The nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air. The mucus also moistens, नमी फराहम करता है, and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of body temperature. The nasal cavity opens into the pharynx. Again, look at the picture and see the checkpoints: our pharynx, glottis, voice box. Nasal cavity आपको again दिखाया जा रहा है, oral cavity, larynx, trachea, bronchus, singular को कहते हैं left lung, and the diaphragm, pleural, and the pleural also the singular. Right lung, epiglottis, floor of throat, pharynx. ये चेक पॉइंट थे हमारे. So again we will start from the first line. The nasal cavity opens into the pharynx. pharynx में open होती है, जो कि डायग्राम में अगर देखें आपको लेफ्ट साइड टॉप पर नज़र आ रहा है, एपिग्लॉटस के बिल्कुल ऊपर वो pharynx पॉइंट आउट किया गया है. अच्छा, pharynx by means of a two small openings called internal nostrils. pharynx से आगे दो ओपनिंग आते हैं, उन्हें nostrils बोलते हैं. pharynx is a muscular passage, is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus, stomach जो होता है, and the larynx. और larynx में larynx अगर आप देखना चाहें तो राइट साइड पर टॉप से नंबर 4 पर larynx आपको शो किया गया, जो कि थ्रोट का जो पाइपलाइन है, थ्रोट एरिया है, नेक का एरिया है, वहाँ पॉइंट आउट किया गया है. द एयर गोज फ्रॉम द pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of a pharynx which leads into larynx, जो कि larynx में दाखिल होती है. The larynx is a box made of a cartilage. It is present between pharynx and trachea. It is also called voice box. इस एरिया को voice box कहेंगे, यहाँ आवाज़ पैदा होती है. Two pairs of a fibrous bands called vocal cords. ये vocal cords से वाइब्रेट होके एयर जो वाइब्रेट होती है तो तब आवाज़ डेवलप करती है, आपकी वॉइस डेवलप होती है. Are stretched across the larynx. These vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sounds. First of all, we used to check checkpoints in diagram. Nasal cavity again, trachea, थ्रॉट का नीचे वाला एरिया ट्रैकिया होगा, जो कि आगे लंग्स में जाके ओपन होते हैं. फेरेंक्स आपको पता है, लैरिंक्स की भी बात कर चुके हैं. तो जो ट्रैकिया की ब्रांचेस होती हैं, थिनर ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रंक्यूल्स बन जाते हैं, और वो जहाँ फिनिश होते हैं वो एल्वेओली बनते हैं. देखते हैं हमारी इंफॉर्मेशन क्या है. Larynx continues to the trachea which is also called the windpipe. Trachea को ही हम windpipe कहते हैं. It is about 12 centimeter long tube which lies in front of the esophagus. There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of a trachea. The cartilages keep the trachea from the collapsing.
वो कार्टिलेज का काम होता है कि ट्रैकिया को टकराव से बचाए, इवन देर इज़ अ नो एयर इन इट, यहाँ तक कि इनके अंदर एयर ना भी हो. ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. सिंगुलर ब्रोंकस होता है एज डिस्कस अर्लियर. The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enter in the lung of its side, अपनी side पर enter होगा, and then divide into smaller branches called alveoli. The bronchi continue dividing in the lungs until they make a several fine tubes called bronchioles. Again diagram में देखें आपको bronchioles दिखाए जा रहे हैं. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower the bronchioles and fine tubes called alveolar ducts. जो last tubes बन जाती हैं alveoli की, उन्हें कहते हैं alveolar ducts. Each alveolar duct opens into a cluster of pouches called the alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. It is bound on the outside by a network of capillaries. एक नेटवर्क बनता है, बारीक तरीन जो नालियाँ होती हैं ब्लड की बॉडी में, उनका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है. The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lung and the branches into the arterioles and then into the capillaries which surrounds the alveoli. These then join together to form a venules बनेंगे which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries oxygenated blood back to the heart. वो वापस हार्ट की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा. The lungs, all the alveoli on the side constitute a lung. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. The chest wall is made up of 12 pairs of ribs and the rib muscles called the intercostal muscles. A thick muscular structure called the diaphragm. ये जो स्ट्रक्चर होगा ये diaphragm कहलाता है. It present below the lungs. ये lungs से नीचे होगा. Now we will see the detail of a lungs. The left lung is slightly smaller and has 2 lobes, and the right lung is bigger than 3 lobes. They are spongy and elastic organs. लचकदार होते हैं, pressable होते हैं. The lungs also have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and the veins. Pulmonary artery सबसे बड़ी होंगी, veins उसके बाद फिर आपकी capillaries आ जाएंगी. Each lung is enclosed by 2 members called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. The membranes enclosed a fluid which provides lubrication for the free expanding and the contract the muscle को यहाँ सुकड़ देते हैं, सुकड़ जाते हैं. So that's it for the today, my dear students.